चैप्टर 11 पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर्स। इसका जो फर्स्ट पेज है बेटा, ठीक है, उस पर हमारे पास सिर्फ एक दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमने करने होते हैं। वो ये कि हमारे पास कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स में हम जानते हैं कार्बन से डायमंड भी फॉर्म होता है, ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है। इससे एक और सब्सटेंस है जिसे हम ग्राफीन कहते हैं। ये एक फ्लैट शीट होती है कार्बन एटम्स की हेक्सागोनल पैटर्न में। ग्रेफाइट से ही ग्राफीन निकाला जाता है। बस एक सिंगल लेयर अगर ग्रेफाइट की हो तो उसे हम ग्राफीन कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्राफीन की जो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो मेमोराइज कर सकते हैं। नंबर 1, इट इज स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, इट इज फ्लेक्सिबल। नंबर 3, its electrical conductivity is high, and that's why we use it for in electrical chips and computer chips, and we use it for strengthening purposes, for making carbon nanotubes, for medical drug delivery and other purposes like conducting materials. So ये ग्राफीन के यूजेस हैं या ग्रेफाइट के यूजेस हैं, सिंगल लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट के। ठीक, ये सिर्फ पहले पेज में है मेमोराइजेशन के लिए। पास्ट 10 इयर्स में से ये सिर्फ एक या दो पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। सो इट्स कैन बी कंसिडर्ड एज रेयर एंड नॉट सच इम्पोर्टेंट। However, हम इसका इंट्रोडक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि ए लेवल्स में ग्राफीन के लिए सेपरेट 2-3 पेजेस का टॉपिक है और वहां पर इसकी फर्दर डिटेल आती है, ठीक है। Let's move on to petroleum, which is the very first and detailed topic of this chapter. ठीक, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल वो ऑयल की फॉर्म है जो हम जमीन से डिग आउट करके निकालते हैं, जिसको फिर हम फर्दर अपने फॉसिल फ्यूल्स के लिए यूज करते हैं। Fossil fuels are the fuels which have been present in the Earth's crust as three major forms: solid के लिए coal, liquid के लिए petroleum या crude oil, और gaseous form के लिए natural gas। ये नॉन रिन्यूएबल है, ये मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद फॉर्म हुए, जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ टाइम हम इसलिए यूज करते हैं, और ये एक फाइनाइट रिसोर्स है, यानी एक दिन ये रिसोर्स खत्म हो जाएगी अगर हम इसी तरह से यूज करते रहेंगे। फॉर्म कैसे होते हैं? हमारे पास प्री हिस्टोरिक या मरीन क्रीचर्स या प्लांट्स एनिमल्स जब मर गए तो वो जमीन के नीचे दब गए। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया ने एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू उन्हें कन्वर्ट कर दिया फॉसिल फ्यूल्स में। We can take these fuels out, we can burn them in combustion reactions, and we can produce a lot of energy from them. That's how we have been running for this world for a previous century. क्या किया जाता है? ऑयल या गैस फील्ड अगर हमें कहीं भी लगता है तो हम उसके लिए जियोलॉजिकल या सेस्मिक सर्वेस करते हैं। बहुत आसान है, जो जमीन ऊपर से ग्रीन होती है उसके नीचे ऑयल नहीं होता। अगर किसी जमीन के नीचे ऑयल है तो जमीन ऊपर से barren होगी। Saudi Arabia is a very good example of that. Saudi Arabia lands is mostly barren or desert based. Why? Because there is a lot of oil beneath those lands. Seismic surveys are the surveys which are used with the help of charges or bombs. हम छोटे छोटे charges या bombs place करते हैं, जमीन के अंदर हम holes pierce करते हैं और देखते हैं कि वहां से गैस या ऑयल का फ्लो है या नहीं, और उससे हमें अंदाजा होता है कि how much promising that reservoir is going to be, ठीक है, उसमें से कितना ऑयल या कितनी गैस निकलेगी। ये लैंड पर भी किया जा सकता है और ये सी बेड के अंदर भी किया जा सकता है, ओशन बेड के अंदर। बहरहाल once we come to know कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑयल या बहुत ज्यादा गैस है, we start digging it, taking it out, and then we start refining it for our own consumption. The process of refining it is known as fractional distillation. इससे हम उस सारे क्रूड ऑयल को निकालते हैं और उसे अपने लिए ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे पास रेडी टू यूज हो और हम उन्हें डिफरेंट पर्पसेस पर यूज करते हैं। The whole process would be explained in the fractional distillation part. याद रखिएगा कि इसमें से ज्यादातर हम फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन 10% मटेरियल इसमें से फीड स्टॉक होता है। वो केमिकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है, उससे हम बहुत कुछ बनाते हैं। We are making fabrics, paints, detergents, shampoos, soaps, not exactly soaps, but the list goes on with paints, dyes, plastics, and the lists of components that we use in daily life are actually coming from this entire feedstock. हम इनके बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को रिफाइनिंग इंडस्ट्री में सेपरेट करते हैं, we call it an oil refinery. उस रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर में, we call it a fractionating column or a tower, और वहां पर हमारे पास ये कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। कैसे सेपरेट होते हैं? Let's take a look at this diagram at the bottom of page 277 to give us an idea how we do that.
सबसे पहले पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल हमारे पास एक प्री हीटर में आता है. Remember, the temperature of this preheater is around 350 to 400 degree centigrade. ये पीछे बुक में प्रीवियस पेज पर लिखा हुआ है. यहाँ पर आप खुद अपनी आसानी के लिए नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे. इसका पर्पस ये है कि हम यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें इतना हीट कर लें कि बाद में अगर हम इन्हें स्लोली कूल करें और कंडेंस करें तो हम इन्हें डिफरेंट लेवल्स पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के रिसीव कर सकें. एंड एज यू कैन सी हम इन्हें रिसीव करते हैं डिफरेंट पार्ट्स पर. आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास रिफाइनरी गैस टॉप पर है एंड दैट्स लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर. जितनी गैसेस होती हैं वो यहाँ पर निकल आती हैं और हम इन हीटिंग और कुकिंग पर्पसेस के लिए लेते हैं. मोस्टली C1 से C4 तक हमारे पास गैसेस यहाँ पर रिसीव हो जाती हैं. ठीक. Up next is gasoline. ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेपरेट हो रहा है. This is a fuel for cars. We commonly call it gasoline or petrol. Next up at 110 degree centigrade is naphtha. Naphtha chemicals बनाने के लिए होता है. It's a paints, dyes और बहुत सारे और chemicals, plastics वगैरह सब कुछ इसी से manufacture हो रहा है. इसी का बड़ा portion हम feedstock या raw material के लिए different chemical industries में use कर रहे हैं. At 180 degree centigrade is the next fraction, kerosene या paraffin. ये fuel है jet engines का और आज भी दुनिया के गरीब मुल्कों में ये heating oil के तौर पे use होता है. Well, it's mostly used as a jet engine fuel, domestic and military aircrafts both. ठीक है. Next up, diesel oil है. ये diesel engines में use होता है. Diesel engines are much bigger than car engines. They are bigger, they are stronger. So they need a fuel with bigger chains too. Hence, diesel oil. Next up, fuel oil है. इसका नेम हम ship oil भी बताते हैं. And as the name suggests, ये ships के अंदर use होता है. उसके बाद lubricating oils या waxes आती हैं. ये waxes और polishes बनाने में use होती है. Fraction. आप notice करेंगे कि नीचे के fractions के लिए उसने इतना temperature code range code करने की कोशिश नहीं की because ये different temperature ranges पे available होते हैं. Lastly हमारे पास इस केस में bitumen आता है. Bitumen भी बुलाते हैं इसे हम residue भी बुलाते हैं. ठीक है. और इसको अगर नोटिस किया जाए तो ये surfacing of roads के लिए यूज हो रहा होता है. ठीक. ये thick dark black substance है जिसे हम slightly heat up करके liquid में convert करके surfacing of roads के लिए यूज करते हैं because it then becomes sticky. ये जितने भी parts थे इसमें हर part को हम एक fraction बुलाते हैं. Fraction means a part. It does not mean one compound. Instead, it is hundreds of compounds mixed together. जो fractions ऊपर मिलती हैं हमें fractionating tower में हम उन्हें light fractions कहते हैं because they contain less number of carbon atoms and they have smaller chains in their structures. जो हमें bottom पर मिलती हैं fractionating tower के उन्हें हम heavier chains कहते हैं. That's because they contains a lot of carbon atoms in their chains and these are bigger, heavier chains as the name suggests. ठीक. Different fractions के different uses हैं. If you go from top to bottom, you would understand as written over here that the melting point or the boiling point or the viscosity increases, but let me tell you what decreases is their flammability, the ease of catching fire. ये ज़्यादा easily fire catch करेगा, ठीक है, और ये difficulty के साथ fire catch करेगा. So flammability actually decrease होती है down the series. Bitumen को आग लगाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. It takes time. जबकि refinery gases fire बहुत easily catch करती हैं and may burst if you're not handling them with care in terms of their amounts. Right? Viscosity means resistance to its own flow. Gases flow pretty easily. Then comes lighter, low density liquids which also flow easily. Heavier liquids or thicker liquids afterwards flow with a difficulty. Hence we say कि viscosity या resistance to its own flow down the series increase कर रहा है. And I think it's pretty easy to understand कि carbon number कम है तो वो lighter भी हैं, उनका melting boiling point भी थोड़ा है, उनकी viscosity या movement speed viscosity कम है और movement speed अच्छी है और जल्दी burn कर जाते हैं. जब आप bitumen तक जाते हैं आप कार्बन 70 या उसको क्रॉस कर जाते हैं, चेन्स बहुत बड़ी हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, अपने ही फ्लो में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है.
फ्लेमेबिलिटी बहुत डिक्रीज हो चुकी हुई है, उसके लिए फायर कैच करना उतना ही डिफिकल्ट है बिकॉज द चेन इज टू बिग टू बर्न और टू स्टार्ट बर्निंग, बाय दैट आई मीन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। At this level, what you're supposed to do is not all the exact temperatures or all the exact number of carbon atoms. ये याद नहीं होते हैं। मैं स्टूडेंट्स को कहता भी नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ पहले 2 या 3 इसमें से याद रख सकें तो रख लें। पहला टेम्परेचर याद रख लें, आखिरी टेम्परेचर याद रख लें, ये इतना आपको स्टार्ट और एंड ऑफ द लिस्ट याद हो काफी है। ये जो पूरा एक सेंटर है ये आप नहीं कर सकते, दैट्स फाइन इफ यू डोंट डू दैट। However, the names are to be memorized in order, so make sure कि आप इनका order same रखें। याद रखिए, there are names, alternative names, जैसा कि गैसोलीन को हम पेट्रोल भी कहते हैं, केरोसिन को पैराफिन भी कहते हैं, डीजल ऑयल को गैस ऑयल भी कहते हैं, फ्यूल ऑयल को हम शिप ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, so we have alternative names existing for them, and both of them sometimes have been used in past papers. It's just that कि अगर एक जगह पर क्रूड ऑयल नाम है तो एक जगह पर पेट्रोलियम, यूके एंड यूएस डिफरेंसेस, तो ये डिफरेंसेस की वजह से हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं। मेक श्योर यू आर फेमिलियर विद बोथ, सो इफ दे यूज अ नेम इन एग्जाम you don't get confused by it. ठीक है, if you have any questions regarding fractional distillation, let me know before I move any further. Yes, sir. Are we good? Okay, if we're good, let's move on. Yes. यही वाला काम जो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए किया है, ये हम लैब में भी कर सकते हैं। आप कोई पेट्रोलियम सब्स्टिट्यूट लें, इसे सिरेमिक फाइबर के अंदर डिसॉल्व करवा लें या उसके साथ मिक्स कर लें, सो दैट व्हेन यू हीट इट, इट डज नॉट एक्सप्लोड एंड इट्स सेफ टू हीट। स्लाइटली हीट करें, थर्मोमीटर रखें नेक्स्ट टू द बल्ब ऑफ द कंडेंसर और कोल्ड वाटर के अंदर इसे कंसिडर करें, और यहाँ से जैसे जैसे आप इसे हीट करते जाएंगे, सब्सटेंस के वेपर्स राइज करेंगे, कंडेंस करेंगे और आपके पास यहाँ टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होता रहेगा। आप 2-3 तरह के different substances in different test tubes at different temperatures, less heating, high heating, more heating पे collect कर सकते हैं, और वो different fractions आपको ये अंदाजा देंगी कि हमारे पास fractional distillation कैसे work करती है। So the same kind of fractional distillation can be carried out in the lab, and these kinds of diagrams have been previously used in paper 6. I hope you understand from this diagram the few common questions that we have been previously asking. आवाज आ रही है? Are we good now? Can you hear me now? Am I audible? Can you hear me now? Yes, sir, but आपकी आवाज कट रही है। I think I'm having a little bit of an internet issue. Moving on, the next topic is cracking. Sometimes the demands for bigger fractions is not as much as we are getting it from our planet. For example, if we talk about different demands, diagram at the bottom of page 79 gives us a very good idea. Take a look at it. Petrol, kerosene, diesel oil, lube oils, light or heavy, fuel oils, bitumen, and the gases are not in the same demand. Yeah, we get their quantities in ratio with one another, but how we use them is not what we get. We use petrol much more than what we get from digging out of the Earth's crust. We use far less bitumen than what we get. So if there is a higher demand, we need more petrol, and if there is a lower demand, we may not need bitumen or the lube or fuel oils as much. तो हमें क्या करना होता है, हमें इस डिमांड को किस तरह मीटअप करना है। अब मीटअप करने के लिए हमारे पास जो उसका तरीका है बेहतरीन, वो है क्रैकिंग. As the name suggests, cracking is breaking down of heavier fractions, जैसा कि यहाँ पर mentioned है, heavier fractions such as kerosene और diesel, हम इन्हें break down करते हैं इनके larger molecules को, और इन्हें smaller, more valuable molecules such as petrol में convert करते हैं, so that our supply can meet our demand.
This process is done with the help of cracking. Cracking means this breakdown literally, and with the help of catalyst, hence the name is catalytic cracking. All right? Yes, sir. So let's talk about this catalyst and exactly what happens in catalytic cracking. Catalytic cracking takes place in a huge reactor. We use a catalyst. Catalyst is actually a mixture of powdered minerals, silica, alumina, zeolites. Silica is SiO2, इसका formula हम करते हैं. Alumina is Al2O3. Zeolites are actually mixtures of sodium, magnesium, calcium and potassium salts. इसका formula हम इसलिए इस level पर नहीं लिखते कि काफी सारे salts हैं, कोई एक salt नहीं है. This includes chlorides, sulfates, nitrates, a mixture of many. ठीक है? So we use different salts as a powdered mixture of catalyst. We mix them with the hydrocarbon fraction. The temperature is around 500 degrees centigrade. What the book assumes and does not write is the absence of air. Cracking is carried out in the absence of air. Remember, if there's air and the temperature is this high, boom, explosion होगा और सब उड़ जाएगा. फ्यूल के साथ हम एयर को इतने हाई टेम्परेचर पे नहीं लाते. बुक अज्यूम करती है कि बच्चे को इतनी बेसिक पता है कि इस पे एक्सप्लोड हो जाएगा, इसलिए वो लिखती नहीं है. बट कीप दैट इन माइंड. हम क्रैक पेपर्स को सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन से, और हमारे पास यूजुअली इस रिएक्शन के मल्टीपल आउटकम्स होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द आउटकम्स. लेट्स से हम डिकेन को इस तरह से कैटालिटिकली क्रैक करते हैं. द फॉर्मूला फॉर डिकेन इज C10H22. So upon the catalyst and the work of heat, it would produce octane and ethane for us. Now take a look. One of them is an alkane, one of them is an alkene. The point we're trying to make is that when you catalytically break down an alkane, it produces a small chain alkane and a small chain alkene in order to balance the whole equation down. और उसने बाकायदा structure बनाकर show किया हुआ है. The thing which I just mentioned is also written in the pink portion below. A long chain alkane gives us a short chain alkane and a short chain alkene as one possibility. There is, however, another possibility for which the equation is not mentioned. लेकिन हम उसको खुद से try कर लेते हैं. The second possibility is 2 or more alkanes and hydrogen. Now this can also be bifurcated into 2 categories. हम इसकी भी 2 examples करेंगे. Let's say you broke down C10H22 decane, catalytically cracked, and you will get 2 different alkanes. Let's say आप alkenes, आपको C4H8 मिला और आपको C6H12 मिला, और plus आपको hydrogen मिलेगा. Take a look at this equation. You would see that the number of carbon on both sides of the equation is 10, balanced है. And the number of hydrogen on both sides of the equation is 22, will be balanced there. But you're getting 2 different alkenes and hydrogen. On the other hand, it's also possible, हम सारे possible outcomes कर रहे हैं, ठीक है, that you get the same alkene and just hydrogen, not 2 different alkenes. In this case, you will also find G. C10H20 plus H2 product हो सकता है? Usually हो तो सकता है, लेकिन जब कैटालिटिक क्रैकिंग की जाती है तो हमारे पास स्मॉल चेन अल्कीन जरूर आते हैं. चांसेस ज्यादा ये होंगे कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 के दरमियान अल्कीन्स आपको जरूर मिलें. By that I mean ethene, propene और butene कैटालिटिक क्रैकिंग के रिजल्ट के में जरूर बनते हैं. That is possible what you're saying, but we usually try not to go with that. Okay, Why? sir. Because it kills the sole purpose of what we are doing. Remember, cracking इसलिए किया जा रहा है कि long chains को break down कर दिया जाए short chains में. अगर C20H22 को C10H22 को C10H20 में ही तोड़ना है, तो you actually never broke the long chain. You just took 2 hydrogen atoms out of it. So the sole purpose of cracking dies. However, cracking does not work that way. The name cracking is given because as soon as we go with this process, it breaks the bigger
heavier, longer chains into smaller, more valuable, lighter chains. Okay, cracking में होता ही ये. Are we good with it? Same Yes, page? sir. Alright, good. So Yes, ये sir. वो possible outcomes हैं जो आपको करनी है. आप ध्यान से समझें. अगर आपके पास 3 fill in the blanks आते हैं, ये possible outcome है. अगर आपके पास 2 fill in the blanks आते हैं और mentioned है alkane और alkene, ये possible outcome है. अगर आपके पास एक fill in the blank आता है और साथ hydrogen लिखा हुआ है, यही possible outcome हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है? So fill in the blank type questions, though they haven't practiced it in the variant 2 yet, it only has been a part of variant 1 or 3, but we suspect कि ये variant 2 में कभी भी आ सकता है. Do you get the point of how they can manipulate the fill in the blanks and how you're supposed to come up with the exact possible outcome that conforms with the number of the blanks? Yes, sir. Good. Let's move on then. Cracking is not the only step that we require at this point. ठीक है? Number 1, cracking से को हम lab में भी कर सकते हैं. Lab की cracking के लिए हमारे पास figure 11.7 है. इसे थोड़ा सा समझ लें. This diagram exactly has been used in past paper like 3 to 4 times. बिल्कुल यही वाली diagram बनी आती है. So let's explain this diagram so that the questions that have been considered in past paper before you're able to answer them. First of all, हम पैराफिन को सोक करते हैं एब्सॉर्बेंट फूल में. हम ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम इसे वार्म करें तो ये अनसेफ ना हो. याद रखिएगा, पैराफिन्स या ऐसे फ्यूल्स को डायरेक्टली हीट करना एक्सप्लोसिव हो सकता है, तो हमेशा एब्सॉर्बेंट फूल या कोई ऐसी चीज जो हीटिंग को हमारे लिए थोड़ा सा यूनिफॉर्म कर दे और अनसेफ को सेफ कर दे, हम उसे यूज जरूर करते हैं. रिमेंबर, हम यहाँ पे कभी भी स्ट्रांगली हीट नहीं करेंगे बिकॉज दैट स्टिल इज गोइंग टू बी अनसेफ. स्ट्रॉन्ग हीटिंग हम करते हैं कैटलिस्ट के ऊपर. इट्स ब्रोकन पोर्सलेन पीसेस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्रैन्यूल्स. ठीक है, पोर्सलेन के अंदर SiO2 होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, तो वही सिलिका और एल्यूमिना जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर आ जाएगा. रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग फ्यूल को नहीं करनी क्योंकि वो अनसेफ है, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कैटलिस्ट को करना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम नहीं करेंगे हम उस 500 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की लिमिट को नहीं पहुंचेंगे, which is an important part for the cracking to occur. Do you understand what and why we are doing it? Yes, sir. आपको ये समझ आता है ना कि हम जो कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हीट वार्म जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हम कहाँ पर और क्यों कर रहे हैं? Do you understand the reasons I'm explaining? सर आपकी आवाज कट रही है. Okay, fine. Try going through with it in the recording, and if you still have questions, then हम तब कर लेंगे. ठीक है? Sir, I can't. Okay, just a जी second. sir. So at that temperature, next up is a setup of delivery tubes which take us to a cold water bath. Cold water bath is there in this setup of delivery tubes. A lower one over here and a higher one over here ensures कि कोई भी चीज जो liquid में convert होती हो वो आपके पास इस test tube में इकट्ठी हो जाए. We'll get all the liquid parts, which means bigger chain वाले components यहाँ पर आ जाएंगे. और जो smaller chain components हैं वो cold water bath से liquefy नहीं होंगे. They are still going to remain in the form of gases. वो gases फिर हमारे पास यहाँ पर move करें all the way to the delivery tube, and then they are collected over water. This is known as delivery over water. Delivery over water is actually carried out for insoluble substances, ठीक है? And all the alkanes and alkenes are insoluble. So insoluble alkanes, insoluble alkenes, वो तमाम gases यहाँ से easily pass करती हैं, clean up हो जाती हैं. Water helps stop impurities. ठीक है? Not just impurities, stuff as like dust, etc. उस सब कुछ वो stop कर देता है.
So we can have the gases in the inverted test tubes, we can have the liquids in the straight up test tube, and we can perform all of this cracking in the lab. And that's how we do it. And every step of the way, what we do is important. Why we do it? Because they conform with one another. Okay, so moving on, this produces ethene for us. A lot of ethene is produced from cracking. We can react it with steam and we can produce ethanol of a high purity as we did back in chapter number 10. ठीक है, ये हम already कर चुके हुए हैं. We can polymerize it and produce polythene, which is mostly plastic. ठीक है. We can react it with this is used in plastics, pipes, and this is used in packing material. So these are the uses, and all of these will be considered in chapter 11. In this upcoming chapter, we'll consider all of these uses, all right? Which